Hello student, this is Rohan. Welcome to our YouTube channel Smile Education Point. So student, we in previous class we have discussed about rational numbers and the types of rational numbers. In this video, that is the part 3 of this video, that is the properties of rational numbers. Now in this class we will discuss about the properties of rational numbers. So first property of rational number is the two rational numbers p and q and r by s. First property says that the two rational numbers p by q and r by s is said to be equivalent if p into s is equal to r into q. तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा है कि जो P बाई क्यू है और R बाय एस है तभी उस रैशनल नंबर इक्विवेलेंट हो सकता है, ये दो रैशनल नंबर तभी इक्विवेलेंट हो सकता है जब P इंटू एस इज इक्वल टू R इंटू क्यू होगा. समझे ना बच्चों ना, रैशनल नंबर P एंड Q, P by Q and R by S said to be equivalent if P into S is equal to R into Q. तो स्टूडेंट्स हम उसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे. जैसे कि यहाँ पर एक रैशनल नंबर दिया गया है 4/7. So in this example, through this example, we try to understand the first property of rational numbers. So first property of rational numbers, as illustrated, I have said earlier that 4/7, that is P by Q, and 8 by minus 14, that is R by S, are equivalent in that case. In which case, now 4 into minus 14, here let's say here P is equal to 4, P is equal to P, here P is equal to 4 and here P is equal to 4 and Q is equal to minus 7 and R is equal to 8, Q is equal to S is equal to minus 14. So as given, we divide it, we multiply it P into S and Q into R into Q. When we divide P into S, yes, P into S and Q into R into Q, P into S and R into Q, then what do we get? Now 14 fours are minus 56, 8 sevens are minus 56, 8 sevens are minus 56. So it is equal minus our LHS is equal to RHS, that means minus 56 is equal to minus 56. Hence 4 by minus 7 and 8 by minus 14 are equivalent rational numbers. So have you got it? Have you got the first property that P by Q and R by S is said to be equivalent, in which case when P into S is equal to R into Q, in that case first property is proved. In this case the first property is proved. So student, we will discuss another example of that property 1. So the second example, the question is, so that 5 by 8 and minus 15, this is minus 15 by 24 are equivalent rational numbers. हमने पढ़ा था friends, the second example is, so that 5 by 8 and minus
15/24 आर नॉट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। यहाँ पर बताया गया है कि जो 5/8 है और -15/24 है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है। तो हम वो कैसे उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे? तो देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, वो फॉर्मूला ना, P/Q एंड R/S। तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे ना, उसको हमें P इंटू एस इज इक्वल टू R इंटू क्यू, इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करना है। तो जब हम 5 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल नहीं होता, किससे ना, 8 इंटू -15। सो यह एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं है। देयरफॉर द गिवन रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल। द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू दिस, so LHS is not equal to RHS, so this is not a equivalent rational number। तो बच्चों अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 says that if P/Q is a rational number and M be any integer different than 0, then P/Q is equal to P into M divided by Q into M. Here M is taken as common, here M is common. So property 2 says that if P and Q is a rational number, then M be any integer other than different than 0। यह बता रहा है कि अगर P/Q एक रैशनल नंबर है और M एनी इंटीजर है, जीरो से डिफरेंट है, तो उस वक्त उस जगह P/Q इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू एम डिवाइडेड बाई Q इंटू एम, जो कि यहां पर दिया गया है। उसके बाद राइट 3 रैशनल नंबर्स। हम क्वेश्चन दिया गया है कि प्रॉपर्टी 2 को यूज करके हम इस क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 को समझेंगे। कैसे ना, क्वेश्चन दिया गया है राइट 3 रैशनल नंबर व्हिच आर इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट मींस इक्वल टू 3/5। So we use this property second, that is P/Q is a rational number and M be any integer different than 0, then P is equal to P/Q is equal to P into M divided by Q into M. That is what is written here. So we multiply 2 in both the numerator and the denominator. That is what is written, that 3 into 6 is equal to 6, 5 2s are 10. So multiply numerator and denominator by 2. By multiplying 2 in both the numerator and denominator, we get 6/10. Then again we multiply -3. Again we multiply -3। ये बोला ना, ये हमारा प्रॉपर्टी 2 कि M बी एनी इंटीजर। हम M यहाँ पर जो कॉमन लेंगे, जो M है वो इंटीजर होगा लेकिन 0 से अलग होगा, 0 नहीं होगा। तो इसीलिए हम पहले लिए 2, पहले लिए क्या, तीन नंबर रैशनल नंबर, मतलब 3/2 के इक्विवेलेंट निकालना है ना, इसीलिए हम पहले 2 लिए जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो 3 2 6, 5 2 10। उसके बाद -3 लिए जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है लेकिन 0 नहीं है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू -3, दैट इज 3 3 9, 5 3 15, 9/15 -9/15 -9/15। This is a rational number. Again we multiply
5 इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें 3 रैशनल नंबर बताया गया है ना निकालने के लिए, जहां पर m का वैल्यू हम जीरो के अलावा, जीरो को छोड़कर और सारे नंबर को ले सकते हैं। वो 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, -4 हो सकता है, तो उस वैसे ही लेंगे। तो उसमें हम 5 ऐड कर लेते हैं, कॉमन 5 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by 5, that is 5 3 5 are 15, 5 5 are 25. Hence there are 3 rational number equivalent to 3 by 5 are 6 by 10, minus 15 by minus 9 by minus 15, minus 15 by 25. These are the 3 rational number. This is equivalent to 3 by 5. So students, now we'll discuss the example number 4, that is coming under property 2. So the example 4 state that express 4 by -4 by 7 as a rational number with numerator 12 and denominator 28. सो बच्चों, जब हमारा क्वेश्चन दिया होगा कि -4/7 को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका न्यूमरेटर 12 होगा और जिसका डिनोमिनेटर 28 होगा, तो पहले जिसका न्यूमरेटर 12 होगा, रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर 12, to get the rational number, to get the number numerator 12, we must multiply -4 by -3, -4 by -4 by -3. To get 12, we multiply -4 by -3. So we multiply -4 by -3, that is -4 into -3, -4 into -3 divided by 4 into -7 into -3. So 4 3s are 12, minus 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 plus, so 4 3s are 12, 7 3s are 21, plus minus minus, so 12 by 21. By multiplying -4 by -3, we get the numerator 12, that is what given in bit 1, जो कि bit 1 में दिया गया है कि न्यूमरेटर को, इस रैशनल नंबर को ऐसे एक्सप्रेस करना है कि जो न्यूमरेटर है वो 12 होगा। तो हम 4 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमने प्रॉपर्टी 2 में पढ़ा था कि अगर P बाई Q एक रैशनल नंबर है और M be any integer, M be any integer other than 1, in that case what happened na, P by Q is equal to P into M divided by Q into M. So ये वाला यूज करके हम इसे सॉल्व किए, जैसे 3 को यहाँ पर कॉमन लिया गया, मतलब पी क्यू में कॉमन लिया गया। सो 4 3s are 12, 7 3s are 21. Therefore the required rational number is 12 by -21. तो सेकेंड बिट क्या बता रहा है, डिनोमिनेटर को 28 करना है, 28 करना है, यानी हमारे यहाँ पर 28 आएगा। ठीक है बच्चों, एक ऐसे रैशनल नंबर बनाना है जहां पर डिनोमिनेटर हमारा 28 आएगा। तो हम इस रैशनल नंबर में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग -4 by -7 in by multiplying 4 in both the numerator and denominator, we get our denominator as 28. For example, for instance, 4 4s are 16, that is minus plus minus, and 4 7s are 28, and we got our answer, that is -16 by 28. Hence the required rational number is -16 by 28. तो बच्चों यह सारे जो है वो हम
प्रॉपर्टी 2 को यूज करके सॉल्व करेंगे, जैसे कि बताया गया है इफ पी एंड क्यू आर रैशनल नंबर देन एम बी एनी इंटीजर अदर देन 0, देन उस समय ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी 3, दैट इज if P by Q is a rational number and M is a common divisor of P and Q, then P by Q is equal to P divided by M divided by Q divided by M। तो यहाँ पर बता रहा है कि प्रॉपर्टी 3, अगर P by Q एक रैशनल नंबर हुआ उसमें M एक कॉमन डिवाइजर होगा, जो कि प्रॉपर्टी 2 में होता था। प्रॉपर्टी 2 में क्या मल्टीप्लाई होता था, वही m जो कॉमन डिवाइजर है यहाँ पर डिवाइड होगा। ठीक है, न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ, वही बता रहा है इफ p बाई q इज अ रैशनल नंबर देन m बी अ कॉमन डिवाइजर of p and q, then p by q is equal to p divided by m whole divided by q divided by m। So this is the property 3। So let's solve an example। The example states x plus minus 21 by 79 as a rational number with denominator 7। तो -21 बाई 49 को हम उस रैशनल नंबर को डिनोमिनेटर 7 करेंगे। कैसे? टू गेट डिनोमिनेटर 7 वी जस्ट डिवाइड -21 by 7 and -49 by 7। So 7 3s are 31, 7 3s are 31 and again 7 7s are 49। We got our rational number comprising of denominator as 7 in denominator। So by multiplying the common divisor m in both the numerator and the denominator, we get our rational number, we get our rational number having denominator 7। आप लोगों को समझ में आया बच्चों? जब हम 21 और 49 में, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन डिवाइजर है 7, कॉमन डिवाइजर है 7, जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है कि डिनोमिनेटर 7 आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम -21 में 7 डिवाइड करने से -3 आएगा और 49 में 7 डिवाइड करने से, 7 को डिवाइड करने से 49 से 7 आएगा। सो हेंस -3 by 7 is required rational number। So student, for today's class in today's class we have discussed about the properties of rational numbers। So I hope you liked our video। अगर आप सभी बच्चों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हमारा YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी के पास पहुंच पाएगा। तो बच्चों, ये था पार्ट 3। पार्ट 4 के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।